Aguru, we have already completed 2 units of my greatest Olympic prize of invitation one, invitation to English one. Today, I've taken the chapter three. You can say the unit three of that chapter. That is your my greatest Olympic prize. So as we have already studied, आम पढ़ी सारी छे जे जेसी ओवेन्स कि भलिया माने प्रेशर रे थिले स्ट्रेस रे थिले आउ से कि भलिया ट्रायल सेक्शन टा तांगर क्लियर करचंती विथ द एडवाइस ऑफ लॉज लॉन्ग. And in this unit, we'll study about exactly how and what happened in the final games of that Berlin Olympics, and how did he score, whether he had able to score or not, what had happened with Jesse Owens in the finals, etc., etc. So what happens? Let's start the text. The text is like this. That night, I walked over to Lord Long's rooms in the Olympic Village to thank him. So that night, what happened? I walked over to Lord Long's room in the Olympic Village. सेई दिन राति रे जो दिन ट्रायल सेला सेई दिन राति रे मु कौन कली आई वर्कड ओवर टू लॉज लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज. ओलंपिक विलेज जो ओलंपिक प्लेयर मान जो गाँ तैयारी हुए जोटी से क्वार्टर थाए मु कौन कली मु सेठिकी राति रे लॉज रूम को गली. यस आई वर्कड ओवर टू लॉज लॉन्ग्स रूम्स इन द ओलंपिक. तो तांकर रूमटा कोठी थिला ओलंपिक विलेज रे थिला. टू थैंक हिम. एंड व्हाई डिड आई गो देयर? मु कोन पई गली? टू थैंक हिम, तांको धन्यवाद दवा पाए. बिकॉज ऑफ हिम आई हैड देयर आई वाज प्लेइंग इन द फाइनल्स. दैट्स व्हाई आई न्यू दैट. मु जानी थली I knew that if it had not been for him, I probably would not be jumping in the finals the following day. So what happened? If it had not been for him, I probably would not be jumping in the finals the following day. से जदि नथान्ते से दिन से जदि मते एडवाइज करी नथान्ते ताहले मु फाइनल्स रे खेलु नथान्ते. Look at the sentence construction, beautifully constructed sentence is there. So what happens here? He wants to tell, se kahiba pai chahunchonti, exactly he wanted to tell that because of Lodge Long, he is just playing in the final. He wants to tell. Jesse Owens wants to tell here, and he wanted to thank him. In the finals, the following. We sat in his quarter and talked for 2 hours. We sat in his quarter. Tango quarter ame bosilu. We sat. We sat in his quarter and talked for 2 hours. How long we talked? For 2 hours. 2 घंटा में कथा बर्ता हेलु. Talked for 2 hours. And what did we talk about? आमे को विषय कथा हेलु. कौन कथा हेलु सेठी आमे 2 hours about track and field. Track and field. That means game and sports. Game and sports विषय आमे कथा हेलु. खेला विषय कथा हेलु. ट्रैक एंड फील्ड आर सेल्फ्स आम निजे विषय भी कथा हेलु. आम मोर परिवार विषय मु कहली तांका परिवार विषय से कहले अबाउट आर सेल्फ्स. द वर्ल्ड सिचुएशन एंड ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड सिचुएशन. पृथ्वीर परिस्थिति, राजनैतिक परिस्थिति, अर्थनैतिक परिस्थिति विषय में कथा हेलु. द वर्ल्ड सिचुएशन एंड ए डजन अदर थिंग्स आउ बहुत गुड़ाए अलगा जिनस विषय भी आम कथा हेलु. विथ डजन ऑफ अदर थिंग्स. डजन कहले आम जानती डजन कहले एटा गोटे नॉर्मली आम यूज करूँ माने गोटे डजन कदली कहले 12टा कदली, गोटे डजन एप्पल कहले 12टा. बट हियर डजन ऑफ अदर थिंग्स माने मेनी मोर थिंग्स. सेकेंड पैराग्राफ. When I finally got up to leave and at the end of our at the end मुझे तो बड़ा उठली कौन करबा पे छाड़ीपा मोर रूम को जीवाई गेट अप टू लीव. वी बोथ न्यू आम दुई जन अनुभव करूँ आम जापरूँ दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड. ए रियल फ्रेंडशिप गोटे वास्तव बंधुता आम दुई जन भितर, गोटे प्रकृत बंधुता आम दुई जन भितर. यस देयर वाज ए बॉन्ड बिटवीन अस. आम भितर जन्म होता माने आम नुआ बंधुता सूत्र में आबद्ध हो जाइलु आम दुई जन. So what happens about track and fields? And yes, when I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. Lodge would go out to the field the next day. गत
आसंता काली फाइनल मैच अच्छी सो लज वुड गो आउट टू द फील्ड द नेक्स्ट डे परवर्ती दिन लजलंग जीवे कौटी की फील्ड को जीवे कौन पाई जीवे द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड से जदि से चेष्टा करेंगे मत हरैवा जदि से पारे यस नो एंड आई विल ऑल्सो डू सेम मु भी से भाया करी यस नो सो ट्राइंग टू बीट मी इफ but I knew that he wanted me to do my best but he knew yes or no but I knew that he wanted to do my best से चाहूले जे मु भल परफॉर्मेंस करिबा दरकार से सेमती चाहू नथिले जे मु कम माने खराब खेली आ से जीति जीवे नो इट वाज नॉट हिज इंटेंशन एट ऑल एटा तांकर इंटेंशन नथिला से कौन चाहूले जे मु मोर बेस्ट देवी आउ सी तांकर बेस्ट देवे एंड हु विल डू बेटर यू विल विन द मैच सो इट इज व्हाट इट इज द साइन ऑफ ए गुड फ्रेंडशिप गोटे बंधु के चाहे ना जे से तार बंधु ठारू से हारू कि ता बंधु ता ठारू हारू से चाहे जे मो बंधु सहित भल हिसाब रे प्रतिद्वंद माने कंपटीशन करी कंपटीशन जार स्किल भल सी जीतब यस नो so he wanted me to do my best even if that meant my winning it doesn't matter जदि मु जीति जाए that doesn't matter at all for him किंतु से चाहूले मु भल परफॉर्मेंस देवी से he wished me best of luck for the next game you are the opponent of the Owens still he wanted that Owens must do his best Owens निश्चित भावे भल खेल प्रदर्शन करवा दरकार mean my winning as it turned out it's an important phrase turned out कहले it's a phrasal verb and it means what resulted so what happens as it turned out phalaswarupa in this phrase the total meaning will be phalaswarupa so as it turned out तांकर जो did his best एभलिया तांकर पुराना रेकर्ड जहाँ थिला सब भांगी देले से माने एते बेस्ट परफॉर्मेंस देले in doing so एभली करिबा द्वारा in doing so it's a in doing so participle preposition मन रखिबा पहिले in doing so he put me on to a peak performance मते मोर बेस्ट दबा पई से बाध्य कले he pushed me up to my peak performance I remember more mane achi I remember that at the instant means as an example of that or at that very moment at the instant I landed from my final jump more जो final jump thila final event रा last jump thila landed from my final jump मुझे daily would happen the one which set the Olympic record of 26 feet 5.4 inches जो जंप रे मु कौन 26 feet 5.4 inch डेली मु से जंप टारे कौन हला he was at my side and he was besides me who was besides me you know Lajlang was besides me she mo पार्श्व ठिया हेतले at that time though he had lost the match जदि भी से मो ठारू हारी थिले but he was besides me से मो पाखरे थिले and he was congratulating me से मते शुभेच्छा जणाउथिले congratulations you had won the match ए भलिया स्पोर्ट्समैनशिप रो उदाहरण बहुत रेयर देखिबा को मिले रे पिले yes or no we mustn't ignore such type of situation because this is a rarest situation in this world yes or no जे जते बेला तमे माने तमे दी जण सांग तम ठो हारी जाइछि तमे जीति जाइछ तम सांग आसी तुमको कंग्रेचुलेट करूची ओ भी ओपन हार्ट खोला हृदय रे तुमको कंग्रेचुलेशन जणाउची isn't it a rarest situation so congratulate despite ha satwe despite the fact कहले सत्य despite the fact यह सत्य जे
Hitler glared at us from the stands not 100 years away. Hitler, the ruler, he was glaring them. Glare कहले कौन माने रागरे कटमट करी छाइबा. To stare angrily is called glare. Glare कहले to stare angrily. So Hitler glared at us from the stands not 100 years away. Just 100 मीटर भी हबनी. 100 मीटर भी हबनी. 100 मीटर कम दूरता भितर हिटलर बसिचंती आउ से देखुचंती ये सिचुएशन टाको दो Ludlung was not afraid. Ludlung was not afraid at all. से हिटलर रो से जो चाहानी प्रति तांकर डर नथिला. He was not afraid at all at the glaring of Hitler. Yes or no? Hitler. From the stands not 100 years away, Lodge shook my hand hard. And Lodge shook my hand hard. ମୋ ସହିତ କରମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ ଆଉ ହାର୍ଡ. It was not fake at all. It was not just fake friendship or fake handshake. It was a real hand at the time. So took my hand hard and it wasn't fake. And it wasn't fake. एटा फेक नथिला. फेक कहले कृत्रिम. फेक एफएके फेक कहले कृत्रिम. तो सेई जो करमर्दनटा कृत्रिम नथिला. देखा देखाणिया नथिला. देखिथिबो भारत पाकिस्तान जेतले मैच हुए पाकिस्तान खेलाड़ी सब आउथबे हाथ को हाथ बाड़े दउथबे जाउथबे. दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड व्हाट फेक. that is not real exactly. So wasn't fake smile with a broken heart sort of grief either. And that handshake was not at all fake. And the smile he was wearing, Ludlung was wearing, it was not at all fake. And it was not sort of grief rather. So it was all real. It was all real. Jesse Owens सेठी कहबा पई चाहूचंती जे लजलंग मनरे टिके भी दुख नथिला कि ग्लानी नथिला. ही हैड डन हिज बेस्ट. से तांकर बेस्ट देइतिले. मु मोर बेस्ट देइतिली आ बेस्ट दवा भितरे मु जीति जाइतिली. से हारि जाइतिले आ से मते कंग्रेचुलेट करूतिले से समय आसी कि मोर माने मो साइड रे रही के. So the next para, you could melt down all the gold medals and cups I have. एटी गोटे बढ़िया एग्जांपल देइछंती बेले कोन कहिछंती से you could melt down all the gold medals and the cups I have. जदि मो पाखे जेते गोल्ड मेडल्स अच्छी जेते भी स्वर्ण पदक मो पाइची जेते कप्स पाइची से कप्स को जदि मेल्ट कर दिया जाए जो 24 कैरेट सोना लगी ताको जदि मेल्ट कर दिया जाए आई हैव they and they would not be a plating and the 24 carat friendship I felt for Lodge long. आम भितरे जो बंधुता थिला से बंधुताटा 24 कैरेट सोना ठारू भी अधिका प्योर थिला. तुम जानी 24 कैरेट सोनाटा हूँ 99.99% गोल्ड कहले ताकू 24 कैरेट गोल्ड कह जाए. तो से कहते मोर जहाँ भी गोल्ड कप अच्छी गोल्ड मेडल अच्छी सबको जदि मो मेल्ट करदेवी तरल देवी ताऊपर गोटे आस्तरण देवी दैट इज फेक. सेटा माने कंपीट करि परिबो नाही. आमर जो बंधुता ऊपर गोटे आवरण देई परिबो नाही. आम बंधुताटा एते स्पष्ट एते सुंदर थिला. सो कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट फॉर लजलंग एट दैट मोमेंट. से समय मोर मनरे जो भावना थिला मोर जो बंधुता थिला लजलंग सहित सेटा 24 कैरेट ठारू भी प्योर थिला. सो लास्ट पैराग्राफ आई रियलाइज्ड मो अनुभव कली आई रियलाइज्ड व्हाट देन too that Lodlong was the epitome of what Piero de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have in mind when he said the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. Look at the sentence, beautifully coined together. So I realized then, मुझे इस बारे अनुभव कली what that Lodge was the epitome of what Piero de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind. Epitome, epitome कहले example, उदाहरण. Epitome कहले कौन पिले example. Yes. So epitome stand for example. So what happens? I realized then that Lodge was the epitome of what Piero de Coubertin. गोटे बढ़िया सुंदर वर्ड आला. Piero de Coubertin. He was considered as the founder of modern Olympic Games. Piero de Coubertin को modern Olympic Games रो founder बोली कहा जाए. modern आधुनिक ओलंपिक रो प्रतिष्ठाता बोली कहा जाए.
The periodic Kubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said. तो एठी गोटे बढ़िया एग्जांपल देइछन्ति जेसी ओवेन्स जे सेते बेले से अनुभव कले जे पीरियडिक क्यूबेटिन गोटे ओलंपिक जेते बेले स्टार्ट हला रीस्टार्ट हला 1953 रे सेते बेले से गोटे बढ़िया कथा कहितले कोन कहितले द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट सो व्हाट इज द वाइटल पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स इट्स नॉट विनिंग जीतिबाटा ओलंपिक गेम्स रे बड़ कथा नाही. So what is important then? To take part. To take part. तो भाग नबाटा होची ओलंपिक गेम्स रे सबुठारु बड़ जिनस जीतिबाटा इम्पोर्टेंट नाही. से बेले आपिले मु भी सब बेले परीक्षा दबाटा इम्पोर्टेंट नाही. परीक्षा रे केते मार्क पाइबा सेटा इम्पोर्टेंट नाही. इट्स वी मस्ट राइट आवर एग्जाम. आमे लेखिबा दरकार हमर गोटे अभ्यास हवा दरकार. यस नो बट बिफोर दैट before you are writing your exam you must be prepared mentally and physically. आमे जदि भल परिश्रम करिचे भल फल आसीबो तेणु फल पई चिंता करिबा नाही. आमको पार्टिसिपेट करिवार अछि वी आर टू पार्टिसिपेट. यस और नो. भगवान कृष्ण गीतार गोटे बढ़िया सुंदर कथा कहले कोन कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म करि जाओ फल पाई आशा करो नहीं. भल कर्म करिछ भल फल पाइबा खराब कर्म करिछ खराब फल ही पाइबो. खराब कर्म करिकि भल फल आशा करिबा वृथा. सो व्हाट हैपेंस मस्ट हैव बीन in mind when he said the important thing in the Olympic games is not winning but taking part. ताहले पिले एठी गोटे important point आछी कोन what is the motto of Olympic games according to periodic Kubertin. एठी हमें लिखिबा it's not winning, it is taking part. This is the most important thing in the Olympic Games. According to whom? According to Pierre-Louis Coubertin, the founder of modern Olympic Games. Last sentence. The essential thing in life, जीवन एसेंशियल कौन बढ़िया सुंदर जिनस लिखाई पे प्लस टू जी पाठ अच्छी सबू पाठे किसी ना किसी मोरल थेम अच्छी तुम मैंने कौन शिखब से भी माने से हिसाब से पाठटा सब तैयारी कराई. दिज आर नॉट ओनली मियर स्टोरीज केवल गल्प नुहे एथे बहुत जिनस शिखबार जिनस अच्छे. सो द एसेंशियल थिंग इन लाइफ जीवन में एसेंशियल कहले अत्यावश्यक. सो द एसेंशियल थिंग इन लाइफ जीवन सबुठार आवश्यक जिनस एसेंशियल जिनस होची नॉट कनक्वेरिंग. कनक्वेर कहले विजय लाभ करिबा. नॉट कनक्वेरिंग बट फाइटिंग वेल. बट फाइटिंग वेल. कनक्वेरिंग इज नॉट आवर सोल गोल बट विल फाइट वेल स्टिल वी एलिव. जेते दिन बंचिबा आमे फाइट करिबा भल से फाइट करिबा केबे हार मानिबा नहीं. जीवन रे अप एंड डाउन विल बी दिस अ पेन एंड प्लेजर आर टू फोर्स ऑफ कॉइन. यस और नो. विदाउट वन अनदर इज मीनिंगलेस. दैट्स व्हाई वी मस्ट कीप फाइटिंग वेदर वी आर कनक्वेरिंग और नॉट डजंट मैटर एट ऑल. या माने एटा मायना ही रखे नहीं रे पिले. ताहले कोन द एसेंशियल थिंग इन लाइफ जीवन व्हाट इज द एसेंशियल थिंग इन लाइफ. There may be a multiple choice question. What is the essential thing in life? Not conquering but fighting well is essential thing in life. माने जय कि विजय लाभ करिवाटा अलग कथा किंतु आमे भल से युद्ध करिबा हार मानिबा नाही. सो एटा थिला तमरो कोडा लास्ट यूनिटा. परवर्ती क्लास आमर जो रहिला थर्सडे रे सेही क्लास रे आमे कोन पढिबा द क्वेश्चन आंसर ऑल द टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कस करिबा. So see you there in the Thursday class, this second year class Thursday, Monday और Thursday रे second year class होची 7:30 PM रे. आउ स्पोकन इंग्लिश क्लास तो हमरो चाली 11:30 AM सकाळे सब दिन से क्लास रे आसंता काली आमे पढिबा. आमे वर्तमान व्याकरण सेक्शन पढुचे. आज आमे सेंटेंस रो टेंस विषय रे पढिचे. काली टेंस रो स्ट्रक्चर विषय रे पढिबा. सी यू देयर इन द क्लास. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड विथ मास्टर ऑफ इंग्लिश.